So am I audible to you? Yes. Okay. So we can start, sir. Okay. Good evening, everyone. I hope I am audible as well as visible. Are you able to hear me? Waiting for your message. Good evening, everyone, again. I hope I am audible as well as visible. Okay, Aditya, thank you. I hope you are doing fine and getting ready for the upcoming examination. Hardly 2 months are left, and these 2 months are very, very vital. And pressure is going to be created on you, but try to handle the pressure very well. So those people who are appearing this time on 28th of May, so for them, it's a clear-cut message. Now you start focusing mainly for prelims and try to solve as many questions as you can. Then only you will have a complete idea. Particularly the previous test questions, go through that because they will give you some direction from where and this section and what type of question normally they come. And once you go through the previous test questions, at least for the last 5 years in my subject, then you start doing practice, you can say, by picking up the questions of the various test series. But first thing, go through the actual question ask, because then only you will come to know what type of question, what is the level of the question. 3 types of questions they can come, or basically they can be formed. First is called factual, factual. So nowadays factual question based on data, so they don't come. Second is called conceptual question based on concept. Okay, that requires lots of concept on your part. But the most difficult part is the application-based question. Application of the concept. Not only you must be knowing the concept, but also you must be in a position to get the answers of those questions which are based on concept. So concept along with the application. So these questions, they are very tricky. And knowing the concept, I have seen many people making the mistake. So get ready for that. To take up those questions very, very seriously. And here the previous question they are going to help. Questions basically they are going to be the means. By taking one question, you can form many questions based on that concept. So these things are few. These things are basically the clue I'm going to give you. In economics, there are 15 questions roughly they come on an average. I'm not adding questions based on current. So 15 questions, out of that totally dominance is of banking and the public finance. So out of 15, I don't think up to 12 questions, you will find this thing difficult. 3 questions, they are a little bit dicey. So even if you are able to solve 12 out of 15, so it will come to 80%. You don't need that much of marks. Okay? You need only 55%. So this paper can generate some surplus. So the other papers or other subjects, so there it can be used as a compensatory, you can say, or compensation. So these things are, you can say, okay, Mohammed Kaif, you have mentioned Hindi sir. I hope it's an English batch. Just forget, it was English batch or Hindi batch. So I hope it was English batch. And coming to now, your side. So please ask the question one by one. If you ask the question in Hindi, so I will reply in Hindi. But if you ask the question in English, I will reply in English, no third language. So depending on your question, okay. So language doesn't matter. It's okay. Sir, NNP बता दीजिए. NNP बताइए. I hope कि NNP you try to say net national product. NNP. It may be factor cost. It may be. Okay. So we start with GDP, gross domestic product. Here we add net factor income from abroad. These things I have discussed in detail. Net factor income from abroad. Net factor income from abroad. So when we add net factor income from abroad, then domestic gets converted into national. Then you will have GNP. And here we deduct depreciation or simply consumption of fixed capital. So when we deduct depreciation, so the resultant
this G is getting converted to net, so you will have NNP. So I hope this I have discussed in detail. So NNP at factor cost, this is known to be your national income, and when national income is divided by per population, so you get per capita income. So you will get per capita income. I hope these things are very easy. So NNP का जो concept है, just go through the videos. Okay. So from GDP से GVA कैसे निकालते हैं सर जी? Okay, everything I hope I have discussed in the class. Anyway, in brief, I can give you some idea. Okay, GDP. Firstly, we take GDP factor cost. GDP factor cost. Then we add net production tax. Net production tax. Now remember, it's not product tax. Net production tax, it is equal to tax minus subsidy. Tax minus subsidy. Now production tax is levied on the producer, and it's basically lump sum tax. Lump sum tax, it has nothing to do with the level of production. So yes, similarly subsidy. So there are, for example, regarding production tax, maybe license fee, maybe registration charges. So they are lump sum and they are levied on producer only once. It has nothing to do with the volume of production. And subsidies, they can also be called investment allowance. So they are also lump sum provided to the producer. So then when we add net production tax, then this GDP is getting converted into GVA, basic price. GVA, basic price. So GVA and GDP, are they same? No, they are two different things. But lots of confusion is there among the students, whether GDP or GVA, they are same or they are two different things. So many cases you can say, people used to write, yes, both are the same thing, but that is not correct. Why confusion is there? Because some people, they treat GDP factor cost at GVA factor cost. So then GDP, GVA becomes the same. But GVA always means GVA basic price. So don't get confused. And here, moving to the next page. So here in GVA basic price, so we add basic price. So when we add, I'm taking up the same. So when we add net product tax, it simply means tax minus subsidy. Now, tax minus subsidy, this product tax, it is also levied on producer, for example, it's just like excise. It's a per unit tax. It's not lump sum tax. And these subsidies, they are meant for the consumer, because there are various products in India, so they are subsidized. So they are provided at a subsidized rate to the consumer, particularly those belonging to the poor income, low income group people. So when we add net product tax, then it becomes GDP at market price. So these things, I hope I have discussed in detail in the class. So go through the video. Everything is discussed in detail. Coming to now the next question. Be slow. Okay. Bond yield and BPS discussion. Now, while I was discussing the bond market, I clearly gave you some ideas that there is an inverse relationship between the yield rate and bond prices. So when the bond prices increase, yield rate means the actual rate of return what the bond holders are getting. So there is an inverse relationship between these two. Now the coupon rate basically the actual rate of return or rate of interest offered by the bond issuer. Suppose the government of India is issuing bonds of something and the rate of interest is 10%. So 10% is basically the coupon rate offered by the issuer of the bond. In the bond market, demand for bond keeps on fluctuating. If the demand for bond increases, what will happen? It will increase the price. And when the price increasing, so actual rate of return, that is called yield rate, it is going to come down. Suppose the government issue the bond at a rate of, you can say 100. That is the issue price. That is the nominal price. And the coupon rate is 10%. So for every bond held, you will get 10 rupees. 10 rupees. In the bond market, RBI has intervened. This exactly happened in case of Operation Twist. RBI started aggressively buying the bonds from the market, so leading to high bond prices. So when bond prices increases, suppose now bond prices, so they have increased to 120. So suppose a new buyer who has purchased the bond, so for every one bond, they will have to pay 120.
but the return they will get not 10% of 120, 10% of the face value. That is the bond issued by the government. So yeah, for every 120 rupee, you are getting 10 rupees. So definitely your rate of return, actual rate of return, that is called yield rate. So it is going to be less. So there is an inverse relationship between bond prices and the yield rate. This is what, okay? Please take a book for basic economics NCERT. NCERT 9 to 12, known to the whole world. सबको पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि बेसिक स्टार्ट करोगे from 9 to 12. Okay, 12th में there are two books, micro and macro. So microeconomics, MICRO, you have to go through micro only when your optional paper is economics. If not, then don't go for that. Then go for only macro, MACRO. Okay, that is fine. Now coming to sovereign green bonds. It's very simple. Now bonds are issued. Bonds basically they are debt instrument. Debt instrument, and bonds basically they come in the category of long-term loan. Long-term loan. And what is the meaning of the word sovereign? Bonds are issued throughout the world. Bonds are issued by the government of India. Bonds are issued by the government of USA. Every government of the world, they issue bonds. So bonds issued by the government, collectively, they are called sovereign bonds. Now, as the name suggests, green bond. So that is showing you again the purpose. Showing you the purpose. So the proceeds from green bond, they will be used to promote greenfield projects. Greenfield, there are two types of field, greenfield and brownfield. So they will be used only for promoting greenfield projects. So very simple, this is very common. Okay, the book you are asking me for economics, after going through the NCERT, the best book I can suggest you, Indian Economy by Mishra and Puri, but always latest edition. Latest edition comes by the end of the June, maybe first week of July. There you will get everything up to date. So go for that book. That is the best book I can suggest you. Best book. Okay. No other book stands in front of that book. Okay. Then the same as from the name Gudu, you can see what is the Gudu purpose. From name jo hai, you can see the purpose. So coming to now the next question. Which type of question asked from a static part NCERT and the budget, and also which sector of the economy? This question can come from everywhere. I have told you three types of questions they can be found. First is factual, database. So those questions they don't come. Now the second is static means purely based on concept. So from NCERT, a static question they come based on concept. But now application based question they have started coming. So they are very risky, very dicey. Not only you need concept, but you must be knowing the application of the concept as well. Okay, so yes, budget. Budget is so important because budget is for the future. In which direction budget is trying to give India or put India. Okay, so that is basically budget is important. Survey is for the past. It is report card. It's an official version. So report card of the performance of the Indian economy. But the budget is for the future. Okay, you know budget is always meant for the future. Okay, I hope you are comfortable. Book for Hindi. Hindi में भी सेम बुक है. नाम है इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रा एवं पुरी. मिश्रा पुरी. तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. और ये बुक इतनी अच्छी है कि नॉट ओनली आई हैव डिस्कस व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लासेस कि आपने देखा होगा कि सारी चीजें आपस में लिंक है. तो इकोनॉमिक्स को आप डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से अलग करके नहीं पढ़ सकते हो. तो चैप्टर भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट तो अलग करके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज. सो दैट्स व्हाई दैट बुक इज वेरी गुड. तो ये से के मेरे हिसाब से दूसरे बुक की जरूरत नहीं है. तो आई होप कि यू गॉट द आंसर. सर आपके पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग ही है. इस सब्जेक्ट में आई टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन हैव, मोस्ट एप्लीकेबल. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू in this subject you will have 50% discount as all the time. 50%. Reason being, the reason becomes innovative. Once you know the reason, the same reason will become yes. Okay, वर्ल्ड वाइड बॉन्ड क्या है? अरे फिर अभी तो बताया, नाम से पता चल जाएगा. वर्ल्ड बॉन्ड है आपका. इस बॉन्ड का इस्तेमाल क्या होगा? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. सिंपल सी बात है. So from the you can say name itself you can say, and remember nowadays throughout the world more than 175 types of bonds are issued. 175 types of bonds are issued throughout the world. Okay, so purposes they may be different.
terms and conditions may be different, but one thing is common, all they are debt instrument. And the purpose of the issuing bond to get long-term loan, and long-term loan normally they are taken to finance long-term project. Basic rule of finance is very simple. Basic rule is very simple. Ki short-term investment, they should be financed through short-term loan, and long-term investment, they should be financed through long-term loan. It's a very easy, and these things you know already. Suppose in your case, you decided to buy a home. Your family decided to purchase a house. So you are making investment. So what type of investment is? It's a long-term. So definitely to buy a house, you need long-term loan. Okay? And that's why the home loan, their maturity maybe 10 years, maybe 12 years, maybe 15, 20, maybe it can go up to 30 years. It's basic rule. Okay, next question, you got the answer. Then explain net demand and time liability. This I have discussed. There are two types of deposit. We people of India, हम लोग बैंक में दो तरह का डिपॉजिट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. So for we people, okay, from depositor's point of view, it will be called demand and time deposit. Time deposit simply means fixed deposit. So for we people, it is our asset, but from banker's point of view, it becomes their liability. So from banker's point of view, it will be called demand and time liability. Demand and time liability. Demand liabilities, they are payable on demand. Whenever deposit holders, they will demand the money, bank will have to pay. And the time liability, they are also liability for the banker, but they are not payable on demand. They are payable on time, and on time is maturity. Okay. So suppose total deposit with the bank is 100. Okay. Now what is the concept of net? What is the concept of net? So net means, suppose out of this 100 rupee, I am concerned with bank A. Bank A. Now bank A has given 10 rupees of loan to bank B. Out of 100 rupee, 10 rupee of loan was given to bank B. Okay, this is very common. This concept I have also discussed. It is the concept of call money market, where interbanking loan is taken and given. Okay. One bank can take loan from another only for one day, and that loan can be extended for maximum of 14 days. So out of this 100, 10 rupee was given loan to this. Maybe one bank can keep deposit with some other bank. So whatever they have spared their fund. So for the bank A, it's a net demand and time liability. It will come to only 90. And all the rates, maybe CRR, maybe SLR. So they will be applied on NDTL. That is called net demand and time liability. This is gross 90 rupees. It's a net. Reason being, because suppose this bank A has deposited 10 rupee out of this with the bank B. So it will be for bank B, it will be their deposit from this. So, okay, so that will be, rate will be applied on this as a part of bank B total deposit. So if we take rates, if we apply rates on the gross, then it will lead to double counting. It means on this rupee 10, twice you have applied the rate. It will lead to double counting. That's why always we take N, means net. I hope you got the answer. I hope you got the answer. Next question. Okay. सत्यम और मैं क्वेश्चन पूछा है, सर नीर क्या होता है? आपने सुना होगा नीर एंड रीज, रियल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, और नीर का मतलब नॉमिनल. देखो इसको छोड़ो, पहले क्या होता है कि दीज एक्सचेंज रेट, सो दे आर बेसिकली दे आर यूज्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, और देयर आर बेसिकली टू स्ट्रीम, दो स्ट्रीम होता है. एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लोटिंग. दीज आर द टू स्ट्रीम. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट, यानी जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं. थोड़ा सा फीचर आपका देखोगे फिक्स एक्सचेंज रेट का और थोड़ा सा फ्लोटिंग का, और ये भी इंडिया में भी है. इंडियन एक्सचेंज रेट you cannot say 100% it's a floating. Our exchange rate basically it is called managed floating rate. ये हमने पढ़ा भी था. Managed by whom? To manage the RBI. कि suppose कि if rupee starts getting weaker, तो RBI will rate till sometime. लेकिन एक लिमिट से अगर ज्यादा रुपया वीक हो जाएगा तो फिर it will harm more than good. इससे कंट्री को नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा.
तो देन आरबीआई क्या करती है, इट विल इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट और रुपये को और कमजोर होने से रोकती है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा इट विल बी देयर। नाउ देखिए रियल एंड नॉमिनल। रियल में क्या होता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से, प्राइस क्या होता है ना, बेसिकली दे आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई। पहले मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। टुडे रुपी इज ट्रेडिंग और सिंपली $1 द एक्सचेंज रेट कितना है, 82 रुपीज, 82 रुपीज। और यू कैन से द प्राइस ऑफ डॉलर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। सम टाइम डॉलर का प्राइस बढ़ गया, मेकिंग रुपी वीकर, सम टाइम डॉलर का प्राइस घट गया, मेकिंग रुपी स्ट्रॉन्गर। तो ये जो देखोगे कि डॉलर का जो रेट एक्सचेंज हुई है, ये क्यों होता है, तो मेनली बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई। तो बिकॉज इट इज कॉल्ड नॉमिनल, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल रेट। देखिए तो आज $1 इज इक्वल टू ₹82.50। लेकिन अगर ये डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट अगर आप निकाल देते हो, तो बेसिकली अगर मैं लेमन टर्म में कहूं तो ये जो अमेरिकन सिस्टम है ये फर्जी रेट है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं डॉलर वर्सेस रुपी, तो $1 इज इक्वल टू ओनली ₹23, यानी $1 और भारत का 23 रुपी, दोनों का परचेजिंग पावर इज इक्वल। तो दिस इज बेसिकली द रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन ट्रेडिंग किस पे हो रही है, तो हो रही है 82.5 पे। तो जस्ट सी द बेनिफिट दे आर गेटिंग, यानी इन रियल टर्म देयर $1 is equal to only ₹23, but in nominal term for every $1 they are getting 82.5. So question is, can India revalue the currency? Can $1 be made equal to 23 rupees? Yes, revaluation option is there. But the problem is, if we go for revaluation, if $1 is made equal to 23, the rupee will become too strong and the foreign currency supply to India, it will come to zero. It will come to zero. So none of the country has ever gone for, you can say, revaluation. So real में क्या होता है कि adjusted after adjusted, because the exchange rate adjusted after taking into consideration the change in prices, और nominal में it is inclusive of the price. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। In layman terms, 82.5 is near and the 23 basically the real. I hope कि you got the point. Okay, सर क्या ये क्लास ओनली इंग्लिश में होगी क्या हिंदी में? I have give you both option, ये whatever the name is, तो Mr. Cap. So if you ask the question in हिंदी तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा, but if you ask the question in English, ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Not only you can put the question, आप जो है क्वेश्चन ओरली भी पूछ सकते हो, after raising the hand. So when you raise the hand, I am technically not so comfortable. So team management is there, technical team is with you, so they will manage everything. So if you want to ask any question, put the question. But I hope you people are now comfortable in economics. It's a very dynamic subject. If your concepts are not clear, you cannot understand the current. I have told you, or give you in fact the warning. The people of India, most of the people preparing for UPSC, so they are wasting their time after going through the current. Yes, questions are coming from current, no doubt. But current is nothing. It is the outcome of the past and moreover, application of the concept. If you don't know the past, you cannot understand the current. If you don't have the concept, you cannot go for, yes, you cannot understand the current. So before going for current, going for current, आप क्या करोगे? तो आप जो है पहले इन दोनों को, इसलिए एनसीईआरटी, why एनसीईआरटी is so important? Because एनसीईआरटी आपके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका पास भी पता चलेगा और कंसेप्ट भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो उसके बाद नाउ यू आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन, यानी उसके बाद आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। तो शुड नॉट बी फैक्चुअल। व्हाट द पीपल डू, दे कीप ऑन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ करेंट, नो। और जहां पे आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया ना, तो हकीकत यह है कि वहीं से प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। दे आर वेरी पुअर। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, तो दे फाइंड दिस सब्जेक्ट बहुत ही क्या कहोगे डिफिकल्ट। यस, अरिहंत की बुक भी दे आर वेरी गुड। अरिहंत का जो एनसीईआरटी की बुक है, तो वो आपका जो है ना, वो ओल्ड और न्यू, तो दोनों को कंबाइन किया गया है। एंड मोर ओवर करंट थिंग्स ऑल्सो दे हैव बीन एडेड। So they are basically, you can say, advanced version of NCERT. They are very good. They are very good. देखिए NCERT में the best part is, particularly for the beginner,
You can see concept they have been explained by taking some example. कहानी story के फॉर्म में देखोगे, बॉक्स में बनाया गया है कि गांव में दो लोग रहते थे. So that will give you the clear cut picture. So that's why Aryan, ठीक है, अच्छी बात है. If you are able to understand, it's a good. It's a very good. Now come to Satyam. Sir, Bretton Woods system थोड़ा discuss कर दीजिए. Bretton Woods, okay? Bretton Woods 1944, USA. So Bretton Woods 44 countries they participated, and most of the countries who were fighting the war, most of the countries who can be called developed countries of today. और कहा जाता है in the Bretton Woods, fate of the world economy was written. यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की तकदीर लिखी गई. किसने लिखा? डेवलप कंट्रीज लेड बाय यूएसए. और जो सिस्टम उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो उन्होंने डिजाइन किया अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंफर्ट, सो दैट इज नोन टू बी अमेरिकन सिस्टम, जो आज तक उनको डोमिनेटिंग पोजीशन पे रखता है और हम आज तक जो है बैकफुट पे है. वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट ब्रेटन वुड. So three organizations they were created because of Bretton Woods. First is World Bank, providing loan to the member country for infrastructure projects for internal. IMF, okay, providing loan to countries on external front. यानी अगर आप import करते हो और अगर import के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, then you will go to IMF. IMF will give you loan. And the third organization that could not be created, it was ITO, International Trade Organization. So ITO could not be created working as a regulator, supervisor. 4 years later, ITO, instead of ITO, came GATT, General Agreement on Trade and Tariff, and GATT continued till 31st of December 1994. And the next day, GATT was converted into WTO. WTO आज भी है. So WTO is more comprehensive. GATT was covering only, as the name suggests, General Agreement on Trade and Tariff. यानी सिर्फ ट्रेड और टैरिफ के रूल्स को कवर करता था. And WTO includes intellectual property as well. So WTO अभी भी है और अभी तक काम कर रहा है. So yes, Bretton Woods. Now regarding Bretton Woods, so many things happened under Bretton Woods. लेकिन उन सब चीजों पे उतना चर्चा करने का टाइम नहीं. It's a doubt clearing class. It will take lots of time. Because अमेरिका के बारे में कहा है कि अमेरिकन उन्होंने डिफॉल्ट किया, उन्होंने धोखाधड़ी की और यूरोपियन कंट्रीज को चीट किया और बाद में ब्रेटन वुड का ब्रेकडाउन हो गया. तो ये सब चीजें जानना है. उसके बाद कमिंग टू नाउ फॉरेन करेंसी एसेट एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट. ओके, फॉरेन करेंसी एसेट नाम से पता चल गया कि एसेट्स एक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसी. सी इंडियाज फॉरेन करेंसी रिजर्व टुडे इज फ्राइडे, so every Friday RBI declares the status of the reserve. So last Friday India's reserve, it was $560 billion, and for the last 1 week it has increased by $12 billion. So as of today the foreign currency reserve of India, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 15 मिनट पहले RBI का मैं देख रहा था, so now it is $572 billion. So $572 billion. So RBI is not keeping all the reserve in the form of hard currency dollar. Only 10% they are kept in the form of currency. The rest of them, they are invested. Reason being, that dollar is the most powerful currency of the world, and it can be invested anywhere. Anywhere it can be invested. So when you invest, you get some return. If the dollar, huge amount of dollar, it is being kept into the lockers of the RBI, so this is the worst decision you can have. बिकॉज आपने दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी को क्या किया है? लॉकर बंद कर दिया है. क्योंकि करेंसी का द वर्स्ट फॉर्म ऑफ करेंसी कि करेंसी का वैल्यू खुद ब खुद नहीं बढ़ता है जब तक आप उसके फॉर्म को नहीं चेंज कर दो. तो 90% ऑफ द फॉरेन करेंसी, सो दे आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट. यानी आरबीआई उससे इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करती है. वेयर सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट इज गोल्ड. इट इज बाइंग गोल्ड. तो गोल्ड खरीदती है. रिगार्डिंग गोल्ड आई हैव टोल्ड यू गोल्ड इज द ओनली मेटल विच इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व. And the gold prices, they may be fluctuating. कभी बढ़ गया, कभी घट गया. But in the long run, gold prices, they always increase. So what will happen? Gold quantity will remain the same, but the value will increase. So leading to increase in foreign currency reserve. Maybe second example, American government का bond जो है, RBI is buying. Yeah, who can buy the bonds of the American government? As you know, it's a globalization, free movement of capital. So anyone can buy. Any central bank can buy. And RBI is also one of the buyer of the American government bond. So yes, bonds of American government, maybe some other government held by the RBI, it is going to be their asset. Assets acquired in terms
terms of foreign currency. That's why they are called foreign currency assets. I hope you got the point. Next question is SDR, a special drawing right. It's a currency of IMF. Currency of IMF. IMF is criticized because of their small, you can say, their resource base is very weak. यानी RBI से IMF ये चलता है किस पे? तो मेंबर कंट्री के कंट्रीब्यूशन पे, एंड द फंड साइज जहां से वो मेंबर देशों को लोन देती है, इट्स अ वेरी वीक. So now to increase the fund size, then only it will be more equipped. So IMF came out with its own currency that is called SDR. ये IMF की करेंसी है. Although IMF is not a country, लेकिन ये IMF की करेंसी है और it is acceptable throughout the world among the member countries. So what will happen? अच्छे, IMF is not a country, so their currency SDR definitely it will have to be expressed in terms of hard currency. तो IMF जो है ये भी देखोगे डॉलर में कन्वर्ट करती है. और आज की बात करें, कल की बात करें, 1 SDR is equal to or around 1.44 अमेरिकन डॉलर. रेट चेक कर लेना, रेट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. यानी 1 SDR is equal to 1.44 अमेरिकन डॉलर. अब सपोज कि इंडिया इज अप्रोचिंग IMF आस्किंग फॉर लोन और IMF के पास जो है डॉलर नहीं है, तो IMF क्या करेगी? SDR दे देगी. So will India accept SDR? Yes, because it is acceptable throughout the world. So SDR lying with the RBI, it's a part of its foreign currency reserve. Now India is suppose importing from China, तो इंडिया क्या करेगा? चाइना को SDR दे देगा. Will China accept the SDR? Yes. So SDR basically is the currency of IMF और ये पूरे मेंबर देशों में एक्सेप्टेबल है. इवन द नॉन मेंबर कंट्रीज दे एक्सेप्ट SDR. सपोज कि इंडिया इज परचेजिंग फ्रॉम कंट्री एक्स एंड कंट्री एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ IMF और इंडिया कंट्री एक्स को SDR देना चाह रहा है, तो क्या कंट्री एक्स जो कि नॉन मेंबर है, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट SDR? तो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि सर नो, बिकॉज दैट कंट्री इज नॉट अ मेंबर कंट्री. बट करेक्ट आंसर इज यस, क्योंकि कंट्री एक्स जिससे इंपोर्ट करता है ना, वो तो मेंबर है. तो वो क्या करेगा? जब वो इंपोर्ट करेगा फ्रॉम सम मेंबर कंट्री, तो दैट विल बी गिवन एज, वो जो है वो पेमेंट कर देगा. इसलिए आप देखते होंगे कि नॉन मेंबर कंट्री जो है ना, उसके पास भी क्या हो सकता है? SDR हो सकता है. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. कमिंग टू नाउ सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हॉट मनी का क्या होना है? हॉट मनी आई हैव डिस्कस. सत्यम, आई डोंट थिंक यू आर वेरी मच रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी. आई टोल्ड यू FPI पेपर, Foreign Portfolio Investment Policy of 1992. Now, they were foreign investors, so they were allowed to invest in Indian market. Yes, or you can just say in some other sense, prior to 92, Indian companies, they were not allowed to raise their capital from outside India. Only Indian investors, they can be the people who can buy the shares of Indian company. So foreign investors, they were allowed. They now been known as foreign portfolio investment. Now, this is very, very unstable because the portfolio investors, they have made the whole world volatile. They keep on moving their capital from one market to another. अब आज मान लो उन्हें लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है, मार्केट में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इट्स मोर प्रॉफिटेबल. तो सारे लोग क्या होंगे? इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे. नथिंग हैज टू बी डन यूजिंग द कंप्यूटर, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. तो इंडिया में शेयर मार्केट क्या होगा? बूम कर जाएगा. ठीक है, रिजर्व इंडिया का बढ़ जाएगा. कल को उनको लगता है कि इंडिया से बेहतर जो है अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिर वो क्या करेंगे? इंडियन मार्केट से पैसे निकाल के अमेरिकन मार्केट में चल जाएंगे, लीडिंग टू क्रैश ऑफ इंडियन मार्केट. रिजर्व ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कम डाउन. So they keep on rotating their capital from one market to another and creating turbulence, you can say, creating problems for the whole world. तो उनका जो कैपिटल होता है ना, they are not stable, and that's why it is called hot money. ये जो कंसेप्ट ऑफ हॉट मनी है, ये आपके किचन से आया है. किचन में अगर कभी काम किया होगा तो इस सिचुएशन को जरा देखो कि आपने खाना बना लिया और गैस को आपने ऑफ किया, तो बर्तन काफी गर्म है, तो बर्तन काफी हॉट है. अब बर्तन को आपको क्या करना है? बेयर हैंड, यानी कोई कपड़ा या कुछ पकड़ने के लिए नहीं है. अब बेयर हैंड आपको बर्तन को गैस के चूल्हे से उठा करके मेज तक ले जाना है. तो जब आप गर्म बर्तन को खाली हाथ बेयर हैंड अगर आप पकड़ के मेज पे ले जाओगे, तो बर्तन पे आपका जो है ग्रिप कैसा होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा?
तो आप कहेंगे अनस्टेबल होगा। व्हाई सो? बिकॉज इट इज वेरी वेरी हॉट। तो बहुत हॉट है बर्तन, इसलिए आपका जो ग्रिप है इट इज अनस्टेबल। और यही कंसेप्ट जो है आपका वही लागू होता है। बिकॉज देयर कैपिटल एसपीआई पेपर, देयर कैपिटल इज अनस्टेबल। आज इंडिया में, कल यूरोप में, परसों अमेरिका में, so that's why their capital is called hot money. I hope you got the point. Okay, currency basically, okay, you have called the question. Is there a really currency or only medium exchange? It's basically, okay, currency normally किसी country का होता है, but SDR IMF जो है ना, it is not a country. हम लोग कहते जरूर हैं कि it is the currency of SDR, तो ठीक है, बहुत सही है, लेकिन करेंसी भी आपने कहा और क्वेश्चन पूछा है, और ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इनफैक्ट करेंसी ऑल्सो दे आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो मनी का डेफिनेशन आप कैसे देते हो कि मनी इज अ मीडियम एक्सचेंज? अगर मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना हो तो वो मनी होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो वॉट एवर इज ट्रू फॉर एनी अदर करेंसी, द सेम इज ट्रू फॉर एसडीआर। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि इवन द नॉन मेंबर कंट्री कैन हैव a stock of SDR. So I hope you got the answer. Vivek has mentioned, sir, how can we relate economics with current affairs? Vivek, मेरे क्लास में मैंने कई बार कहा है कि you cannot give all the patient the same medicine. आप हर एक पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं दे सकते हो। जीएस के बहुत सारे पेपर हैं। Some of the paper they are very dynamic, particularly paper 3. Some are static, little bit dynamic, तरह तरह के पेपर हैं। तो आपका अप्रोच हर एक सब्जेक्ट का अलग होगा। दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एज नोन टू एवरीवन, इट्स अ वेरी वेरी डायनामिक। ये सब्जेक्ट यहाँ का है, यहाँ का है, एंड थिंग दे हैव टू वेरी वेरी क्लियर है। अगर यहाँ क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप कंसेप्ट को देखें एंड देन उसका एप्लीकेशन। जब कंसेप्ट के एप्लीकेशन को देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एप्लीकेशन भी इजीली समझ में आएगा। तो पहले आप वो काम करें, बिकॉज आई कैन सी रिसेंटली IQRA has conducted इंटरव्यू प्रोग्राम, आपको पता ही होगा। तो मोर देन 100 students they were interviewed by me। मैंने करीब इंटरव्यू लिया था 100 के आसपास बच्चों का, और सबसे मैंने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछा। तो इकोनॉमिक्स में they were totally blank, they were knowing nothing, even though some of the students, so they were giving interview for the second time। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं आता था, एंड देयर आंसर्स वर सो सरप्राइजिंग कि वन ऑफ द कैंडिडेट आई आस्क्ड फ्रॉम हिम कि व्हाट इज बैड बैंक, व्हाट इज बैड बैंक। आई होप कि इट शुड बी नोन टू यू पीपल, बैड बैंक क्या है। तो ही सेड कि अ बैंक व्हिच इज क्रिमिनल इन नेचर। अब सोचो इस तरह का आंसर है कि एक बैंक, बैड बैंक एक बैंक है जो क्रिमिनल नेचर का है। तो मैंने कहा कि बस आप रहने दीजिए, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही पुअर है स्थिति। एंड यस, करंट की मैं बात करूं, यस, क्वेश्चंस दे कम ऑन करंट, क्वेश्चंस करंट पे आते हैं बेस्ड ऑन करंट इश्यूज, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो साइंस का हो। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस, व्हेन कि इन द नेम ऑफ करंट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। हर एक दिन जो है 3 से 4 घंटे पेपर देते हो, तो यू आर नॉट गोइंग थ्रू करंट। आप करंट नहीं पढ़ते हो, आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हो। बाय अर्ली टुमारो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, आप सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि करंट इज नथिंग, आई टोल्ड यू, इट्स द आउटकम ऑफ द पास्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। जब तक ये दोनों की आपको जानकारी नहीं होगी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड करंट। You are only quantitative, keep on collecting the information, they are of no use, because जहां पे आपको लगता है कि your preparation is over, after that preparation for UPSC starts। I hope कि my words are really very tough, but this is a reality anyway। Coming to now next question, so you have to connect the thing। Vivek, when I discuss, आपने मेरी क्लास अगर पढ़ी होगी, तो what I try to do, I try to connect the thing। मैंने कभी भी किसी टॉपिक को अलग करके नहीं पढ़ा है, ऑलवेज ट्राई टू लिंक द थिंग्स विद ईच अदर, एंड दैट इज द की। नॉट ओनली विद इन इकोनॉमिक्स थिंग्स आर लिंक्ड, बट ऑल्सो यू कैन से इन द एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स इज बीइंग लिंक्ड विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इज बीइंग लिंक्ड विद IR। यस, यू कैन नॉट रिमूव इकोनॉमिक्स फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। तो जब आप इकोनॉमिक्स के भीतर चीजों को लिंक नहीं कर पाते हो, तो इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी को कैसे लिंक कर पाओगे? और बेहतर होगा आप अभी से थोड़ा सा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर यहाँ भी अभी स्ट्रगल करोगे ना, तो एग्जामिनेशन में नहीं करोगे, और अभी अगर नहीं करना चाहते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में जरूर करोगे। चॉइस इज योर्स। तो दैट्स व्हाई
It's a very important. The proper sequence first is to listen to the teacher, then to read, and then to write. Right. Writing always comes and then, and the writing skill is developed here, not here. Your hand is going to follow your mind. Instruction यहाँ से आएगा तब आपका हाथ चलेगा. अब ये खाली है तो हाथ कहाँ चलेगा? These are the basic problems faced by you people, particularly in the examination. तो उसकी नौबत नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम देके निकलो तो यू शुड बी टोटली कॉन्फिडेंट कि बस रिजल्ट एक फॉर्मेलिटी है. यू आर थ्रू नाउ. दिस इज व्हाट आई कैन सी. यस सत्यम, यू एग्री विथ मी? एनी अदर क्वेश्चन? शशि अपना सवाल पूछ लीजिए. गुड इवनिंग सर. हेलो. शशि हैज रेज्ड द क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग शशि, कैसे हो? ठीक हूँ सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो सारा एंड प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करते हैं. हाँ. और उसमें कुछ दिनों के बाद डेप्रिसिएशन भी होती है जिस वस्तु को परचेज करते हैं. तो हाँ. फिर उस पार्ट को, डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को अगर मार्केट से डायरेक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यूज करें तो क्या वो एंड इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट होगा या फाइनल होगा? नहीं, ठीक है. यू आर गेटिंग कंफ्यूज. आप कंफ्यूज हो रहे हो because things overlap in between intermediate goods and depreciation. See the things. मैं concept clear कर रहा हूँ कि suppose कि there are three producers in India. This example I gave you in the classroom. कि there are three producers. 3 producer हैं और इनका production जो है it is this much. इनका जो है total production. Same example I am taking. यानी production of A is 100, those of B 200 and those of C 300. So total value of output 600. तो क्या इंडिया में 600 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ है? तो फॉर दैट वी विल हैव टू सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? कि एक प्रोड्यूसर का जो फाइनल गुड्स है ना, वो दूसरे का क्या होता है? रॉ मटेरियल हो सकता है. बिल्कुल. अब जैसे बेकरी प्रोडक्ट, तो बेकरी जो कंपनियां हैं वो आटा खरीदती हैं, यानी फ्लोर खरीदते हैं एज रॉ मटेरियल, और वही उसी फ्लोर या आटे को हम लोग खरीदते हैं ना, तो फॉर फाइनल गुड्स. अब कोल माइंस के तो थर्मल पावर हाउस, तो दे बाय कोल एज रॉ मटेरियल. तो अब इसको देखो, तो इसका जो फाइनल आउटपुट है 100 है. ओके. और इसमें से 30 रुपीज का जो गुड्स है इट इज बीइंग यूज्ड बाय बी एज रॉ मटेरियल, और इसका प्रोडक्ट है 200, और इसमें से मान लो 40 रुपीज जो है इट इज बीइंग यूज्ड बाय सी एज फाइनल ये इंटरमीडिएट गुड्स. सी का कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है. तो अगर आप कहते हो, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो बेसिकली इट इज 600. लेकिन ये हमारा जीडीपी नहीं होगा. क्यों? कि अगर आप कहते हो कि जीडीपी 600 है, इसका मतलब इट्स ए केस ऑफ डबल काउंटिंग. इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया. दिस 100 इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है. दिस 40 इट इज इंक्लूडेड हियर एज वेल एज हियर. So if you say कि 600 is the total production GDP, it will be wrong. It will lead to double counting. So double counting हटाने के लिए क्या करोगे? These two will be deducted. This is called intermediate consumption. तो जब intermediate consumption को माइनस करोगे, then you will have GVA. तो GVA आपका कितना हो गया? 530. अब समझ में आ गया होगा. और जब इसको हम यूज करेंगे ना, इतना हमने प्रोडक्शन किया, फिर जब हम इसको बाद में यूज करेंगे तो देन इट विल बी कंज्यूम ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे कंज्यूमशन भी होगा, हम उसको यूज करेंगे. सपोज कि रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो ठीक है, लाइफ ऑफ द रोड इज 5 ईयर. रोड का तो लाइफ 5 साल है. तो 1 साल जब रोड को यूज करोगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 20%. तो ये तो हमने प्रोड्यूस किया, और बाद में जब उसको यूज करेंगे तो ग्रेजुअली इट विल डेप्रिशिएट. जब हम माइनस करेंगे तो देन ग्रॉस विल बी कन्वर्टेड टू नेट. इसे देखोगे जीडीपी एंड एनडीपी, डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज द डेप्रिसिएशन. So intermediate consumption and depreciation, I hope the difference is clear. Yes or no? Shashi? Yes sir, thank you. चलिए फिर, ठीक है, next question. Very less question they have come. Okay. So it signifies 2 things, either of the 2 things. बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 ही क्यों हो सकता है, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. So I don't know. So not questions are coming, you said. In fact, okay,
we have to inform them little bit earlier so that more and more people they can join. So now you get ready with your doubts. So next time जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, so that will be can say big session, that will be long session. So keep on writing the doubts, budget पढ़ लो, survey पढ़ लो, और जब आप जो है, अरे liquidity trap कुछ भी नहीं है श्रवण, it's very easy. अब सपोज कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यू हैव गॉट सम मनी, तो मनी आपके पास है. रिगार्डिंग मनी का जो करेंसी है, इट हैज टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव यानी कि क्या है कि रिगार्डिंग करेंसी कहा जाता है इट इज द बेस्ट एसेट यू कैन हैव, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिक्विडिटी, इससे बेहतर कोई एसेट नहीं है, बिकॉज इट इज 100% लिक्विड. एंड व्हाई इट इज सेड टू द वर्स्ट क्यों है? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. मनी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एट इट्स ओन, खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, टिल यू चेंज द फॉर्म. So profitability of the money is zero. The two extremes are there. So in order to have some gain, to increase the profitability, what you do? So आप क्या करते हो कि money is deposited with the bank. So bank में deposit करते हो. Now why you come forward and deposit your money with the bank? So because of two reasons. First is safety, that is ignored. Second is some return, so that value of money grows. Okay, if the rate of interest offered by the bank, if it is very high, so definitely it will give you more return and you will be more attracted towards the saving. But under the expansionary monetary policy, there are two types of monetary policy. एक होता है contractionary यानी tight monetary policy. Second is called expansionary. Tight monetary policy में क्या होता है कि rate of interest is increased by the central bank. So lending rate of the bank, it is high. So bank भी क्या करते हैं, deposit को बढ़ा देती है, making your deposit more lucrative. लेकिन when a country goes for expansionary monetary policy, तो जो भारत में हमेशा सरकार चाहती है, आरबीआई को प्रेशर करती है, cut the rate so that growth theory can be promoted. So then right now it is not happening because of the high rate of inflation for the next 1 year. So expansionary monetary policy, central bank will keep on reducing the rate of interest. So as a result, बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, lending rate को कम करना पड़ेगा. So when lending rate is falling, banks are left with no other option to cut the deposit rate as well. So deposit rate जो है, it will come down to a very low level. So जब deposit rate कम होगा, so definitely what will happen? When you deposit your money with the bank, so they will give you, you can say, low rate of interest. So when the rate of interest is falling to very low level, so you become indifferent. यानी कि rate of interest जब बहुत कम हो जाता है ना, so then people they prefer to keep currency with themselves. They don't prefer to deposit their money in the bank. Reason being, because rate of return is very, very low. So they remain, I can say, they prefer to keep the currency in their hand or maybe using for some other purpose. So this rate of interest basically, it becomes immaterial. It becomes ineffective. So when this situation comes, when the deposit holders, people, they become indifferent. They are indifferent. So definitely that is called liquidity trap. यानी country जो है liquidity trap पे फंस गया है. People basically when they become indifferent in between the currency and the bank deposit, so making the monetary policy totally ineffective. So इस तरह का जो है concept जो है, it came during basically it was given by Mr. Keynes during in his book. So these things are more relevant for Western world because Keynes wrote a theory keeping in mind the situation prevailing in the developed country, and they are totally different from ours. Okay, I hope money multiplier I have discussed. Money multiplier, you know, banking, go through the video. Banks create credit. Create करती है. And when RBI is printing the notes, through the credit creation process, it will have multiple impact. And depending on the growth rate of credit. I give the example, मैंने जो है बैंक पे जो है बोर्ड पे लिख के बताया था क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है. It's not the quantity of the money. It's a credit creation growth rate. और अगर वो मान लो, ठीक है, आरबीआई ने 100 रुपीज प्रिंट किया, but that 100 रुपीज led to increase in investment by 1000 रुपीज. यानी आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपीज क्या किया, प्रिंट किया, और इसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपीज का हुआ.
So impact is 10 times. So value of multiplier is 10. It's a money multiplier. So money multiplier basically it is depending on, as you know, 1 by R. R stands for CRR. If the rate of CRR is high, the money multiplier value will be less. Moreover, तो मैंने कहा था कि जो बजट में कहा गया है, बजट में क्या कहा गया है कि जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, अदर देन एग्रीकल्चर, कि क्रेडिट क्रिएशन, ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट, इट इज इन डबल डिजिट. ग्रोथ रेट जो है आपका क्रेडिट क्रिएशन का, इट इज इन डबल डिजिट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. तो ये आरबीआई हैज एवरी डेटा. तो यही से आरबीआई बताती है कि इकोनॉमी जो है बूम में है, रिसेशन में है. क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर एट अ हाई साइड, तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएशन रेट विल बी वेरी हाई. So that is basically the data that is used by the RBI for analysis and giving the conclusion. During the lockdown, during the recession, क्या होता है? Credit creation process becomes very slow. So right now, the credit creation, growth rate of credit creation in India is very, very high. Signifying that, the Indian economy has recovered. And the same statement came through the government, and government clearly said, Indian economy fully recovered. आपने सुना होगा? तो क्यों ऐसे नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे. Because there are many parameters. So they are tested and then conclusion is drawn. And one of them is multiplier value. I hope this point is clear. How to start answer writing? Vivek, for answer writing, our team is there. Mentors are there. They are very good. They are very knowledgeable. And they have basically, they are going to guide you. So yes, main space series भी चलता है यहाँ पे. Moreover, बहुत से लोग हैं, so they are basically dynamic people, so they are there. Talk to them, talk to the management. So now someone has raised their hand. Dr. Sir Shravani. Yes. Yes, sir. Sir, I did understand the liquidity trap which you explained right now. So बस एक ही मुझे वापस आप please explain कर देंगे. Saving rates जो है वो कम हो जाएंगे, right sir? ठीक है. जरा ऐसे देखो, ठीक है. मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो थोड़ा लिंक नहीं कर पाए. इट्स अ बैंक. यू आर फ्रॉम द बैच? अरे बैच के हो ना? इट्स अ पीपल. People, they deposited 100 rupees with the bank. So bank told them to give 10% interest. This is basically called deposit rate. Deposit rate, what the banks are providing to we people on our deposit. Now the same money is given by the bank as loan to whom? To some other person, and charging a higher rate of interest, 15%. So 15% is called lending rate. Lending rate. So lending rate is always basically higher than the deposit rate. You got the point? So that banks can generate some margin. So 10% हमें दे रही है, and the same money is given to as loan. Now this lending rate, it has a direct link with basically the growth theory of the government. Growth theory of the government. Government, in order to promote growth, growth के लिए one of the condition is availability of cheap and sufficient capital. The lending rate of the commercial bank, it should come down. Okay, so RBI is under pressure, but RBI who is working on inflation theory, so whenever rate of inflation high, RBI definitely going to increase the rate so that less capital should be available, and that too at a high cost. So after Ukraine war, you can say repo rate was increased by the RBI so many times. So lending rate, getting loan from the bank, it has now increased. So when lending rate is increasing, so what the banks they will do, in order to attract more and more deposit, they will increase deposit rate as well. What to find out? But when there is no inflationary pressure, so RBI is under pressure from the government to cut the rate. You must be knowing the lending rate has of the commercial bank, so they have been linked with repo rate. Repo rate. So if repo rate is coming down, lending rate क्या होगा? Lending rate is going to come down. So when the lending rate is coming down, banks are left with no other option than to reduce the deposit rate. So deposit rate भी कम रहेगा, so that banks can manage some margin. So when the lending rate is very low ना, तो हमारा deposit rate भी क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा. Suppose कि lending rate of the bank, it came to 3%. So what about the deposit rate? Deposit rate will come to only 1%, because this has to be more than this. Now we people, we deposit our money. अब deposit rate इतना कम हो गया ना कि we find deposits totally you can say useless, एक तरह से not so lucrative. और आप ही कहोगे कि क्या फायदा बैंक में रखे, उससे बेहतर तो आप में रखो, or maybe using for some other purpose, because return from the bank, it has come down to very low level. It means now the policy, monetary policy of the RBI, this side, it is not working.
people, okay, on their behavior, credit behavior is not going to change. So they are indifferent whether rate of interest is basically 1% or 1.5%. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करेंगे कि अपने ही पास रखेंगे. They won't prefer to go to banking sector. तो ये चीजें होती है. So that's why deposits of the country it will come down, and when the deposits are going to come down, so investment भी क्या होगा? It is also going to come down. So country has fallen into liquidity trap. When the bank interest change in the rate of interest, it does not have any impact on the deposits. People remain indifferent. I hope you got the answer, Surabani. You are not audible. So chat में लिखा हुआ है. Sir, thank you, sir. Okay. Sir, और एक question है, sir. Sir, the question is, sir, अब ये ना interlinkages exam में बैठ के लगाना बहुत difficult हो जाता है. The question is, what would be the impact of India's entry into global bond indices? It is going to increase. It is going to improve. Reason being कि अगर आप डेटा में बिलीव करते हो तो एक डेटा आता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो. तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का भी जो है इट इज बेसिकली, लेट अस मेक अ कंपैरिजन, इट इज अराउंड 84%. और इन रुपीज टर्म इट इज 2.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, just below 3 trillion dollars. Now, ideally, economists they believe that the deadline should be 77%, but it should be below 77%. If it exceeds 77%, then it is alarming that country may be falling into debt trap. ये तो ठीक है. Now say, if the debt to GDP ratio is very high, it is not good. It means country is basically moving in a wrong direction. Country may be falling into debt trap. अब अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें, take the case of USA. USA its debt to GDP ratio is 129%. Ours is 84%. अमेरिका का कितना है? तो 129%. ऑफ जीडीपी, उसका जीडीपी भी क्या है? 24 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर. तो टोटल जब हम डॉलर की बात करें तो अमेरिका के ऊपर जो टोटल जो है लोन है 29 ट्रिलियन डॉलर. सीरियस 29. तो वॉल्यूम में इट्स वेरी हाई. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इट्स चाइना. China debt to GDP ratio is 350%, and Chinese GDP it is around 14 trillion dollars. So China के ऊपर the total outstanding loan is 50 trillion American dollar. That's why China is in debt trap now. China जिसने पूरे दुनिया को debt trap में फंसाया, अब खुद जो है China फंस चुका है. China ठीक है has lost the game. मतलब मैच से बाहर है. Now China जितना आगे जा सकता था उतना आगे जा चुका है. अब इससे ज्यादा चाइना जो है आगे नहीं जाएगा. Massive problem. Chinese banks are left with no money. Most of their loans given for big projects, so it has lost. So debt to GDP ratio of China is very high. तो चाइनीज करेंसी जानते होंगे. तो इंडिया का भी क्या है ना कि इंडियन करेंसी आपने पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया अमेरिकन डॉलर से परेशान है. और आपने देखा होगा कि यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ, सडनली अमेरिकन डॉलर डिमांड इंक्रीज. तो उसके कारण क्या हुआ, पूरे दुनिया की जो कंट्री है उनकी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई. हमारी करेंसी 4.5%, यूरो डिप्रिशिएटेड बाय 17%, युआन ऑफ चाइना डिप्रिशिएटेड बाय 13%, लीरा ऑफ टर्की डिप्रिशिएटेड बाय 32%. तो अमेरिकन डॉलर का डिमांड बढ़ गया. बहुत से कारण से उसमें मैं नहीं जाऊंगा. तो सबकी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई. व्हेन डिप्रिशिएशन इज ऑफ करेंसी टेकिंग प्लेस, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि इंपोर्ट बिकम कॉस्टली. तो डॉलर से सब परेशान है और बहुत से देश चाहते हैं कि कुछ डॉलर का अल्टरनेटिव कोई करेंसी आए और वहां पे इंडियन करेंसी को लोग नया फ्यूचर मानते हैं. ये सब बहुत लंबी कहानी है. यूक्रेन हुआ, रूपी रूबल ट्रेड, उसमें जाके सब समझना होगा. तो 18 कंट्रीज बेसिकली दे हैव एक्सेप्टेड रूपी एज अ अल्टरनेटिव करेंसी और रुपीज में ट्रेड करने को तैयार हैं. और 80 कंट्रीज जिसमें कुछ हमारे डेवलप कंट्रीज भी है. सो दे हैव नॉट ऑफिशियली, एक तरह से उन्होंने क्या कहोगे, दे हैव गिवन देयर कंसेंट, यानी दे आर रेडी टू एक्सेप्ट रूपी एज. इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. और यू विल बी वेरी प्राउड टू नो दैट कि लास्ट वीक न्यूयॉर्क टाइम्स, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ अमेरिका, यू नो व्हाट वाज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर? यस, वेरी इंटरेस्टिंग. रूपी कॉमा द न्यू डॉलर, रूपी द न्यू डॉलर. ये हेडलाइन था न्यूयॉर्क टाइम्स का. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू द पेपर.
और बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है, वो इतना आप समझ नहीं पाते हो कि समथिंग बिग, एक बड़ा गेम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेल रही है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ओके, इंडिया पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा सत्यम, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहा। फर्क तो पड़ेगा बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडियन बैंक्स हैव बिकम वेरी वेरी रेजिलेंट। Actual SLR of the commercial bank, it is more than 25%. Liquidity position of the commercial banks is very good. Foreign currency reserve of India, it is very good. And moreover, India has moved from import to export. बहुत सारी चीजों का पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे। अब देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सत्यम कि पहले क्या था। अभी आपने सुना होगा कि डेवलप कंट्रीज में हमेशा मंदी आती है। सबने हमको पढ़ा भी था कि रिसेशन बेसिकली ये विकसित देशों के यहाँ होता है, लैक ऑफ डिमांड। और एक इंडिया की कंपनी है टाटा, तो पहली बार मैंने देखा ऐसा हुआ है। तो वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, पूरी दुनिया मंदी आएगी, तो इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मैग्नीट्यूड में भी वैरी। अब वन ऑफ द कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा सुना होगा, इन्होंने 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है, 470। अब एक एयरक्राफ्ट का दाम तो जानते होंगे कितना महंगा होता है, 470 मीन्स बिग डील। अब एयरक्राफ्ट दो कंपनी बनाती है, एयरबेस फ्रॉम फ्रांस एंड बोइंग फ्रॉम अमेरिका, ये दो है। और इन दोनों का बहुत सारा पार्ट जो है ना ब्रिटेन में बनता है। तो इट्स अ मैसिव अमाउंट, बहुत बड़ा डिमांड है सिर्फ इंडिया की एक कंपनी। तो क्या इसके कारण इन तीनों इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इट इज गोइंग टू हेल्प देम टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और अगर आपको याद होगा तो एक ही दिन में द लीडर्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज, अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन, देन फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, एंड देन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तीनों क्यू में थे। और बारी बारी से इन्होंने मिस्टर मोदी को थैंक्स कहा और यही कहा कि आपके कारण जो है हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इट्स सिंपली आउट ऑफ साइंस, क्योंकि एक डेवलप कंट्री जो है, दी बिग कंट्री यू नो, सो दे आर गिविंग थैंक्स टू इंडिया, पुअर कंट्री यूज्ड टू बी, कि आपके कारण हमारे देश के रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर हम डेप्थ में जाएं तो इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम सो रेजिलेंट, सो पावरफुल, कि ये इतना सक्षम है कि जो डेवलप कंट्रीज में जो रिसेशन मंदी का खतरा है ना, तो इंडिया कैन डेफर दिस प्रॉब्लम, यानी उनके यहाँ जो मंदी का दौर है ना, इंडिया काफी हद तक उसको रोक सकता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये। तो यू शुड बी प्राउड अबाउट योर कंट्री कि in the recent times, particularly when the Make in India program is started, we have moved forward. So we have moved forward. Okay. Kuldeep has asked the question. So CRR, SLR both are kept by the commercial bank. देखो book में लिखा हुआ है कि CRR they are kept by the commercial bank with RBI. But I have discussed you कि where is the physical status of the CRR? So they are kept with the bank themselves, but main with the main branch में रखा जाता है. And SLR liquidity, it is kept with the bank themselves. You got the answer. CRR and SLR different. CRR is absolute. The purpose of CRR is to take out excess money from the market. यानी मार्केट से एक्सेस मनी को क्या करना, निकाल के एक जगह पे जाके बंद कर देना, so that they don't harm the economy. But SLR has a purpose to solve. SLR is related to liquidity, and the liquidity is very important for every businessman, and it is most significant for the banking business, because I have discussed the bank, they are trading on equity, and their liquidity position can change within few hours. And regarding that, I gave you the example of ICICI Bank. So listen to me carefully. मैं बार बार कह रहा हूँ, you are not a good learner because you are not a good learner. आप सुनते कम हो और नोट्स बनाने पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है। That is totally wrong. तो पहले आप बार बार सुने, ध्यान से सुने, and once you listen to me, then only you can be very good learner. I hope you got the difference. No, okay. So she's saying, okay, different countries. See, when the whole world, you can see the parameter GDP. कहते हैं ना कि on the basis of GDP, America is on the top, China is second, India is ranking fifth. So the parameter that is taken globally to give the ranking is the GDP, not the GNP. For the other purposes, they may be calculating GDP, GNP, NDP, NNP, that we are also doing. But the common parameter is the GDP. Yes.
all the time you can say GDP, and GDP, not GNP. So GDP is the best indicator. So ये हमने पढ़ा. Okay, any other question? The questions are almost missing. So should we conclude? So next time, ठीक है, आप अपने questions को ready रखें. Very soon, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, हम लोग जो है. So we'll have this session tomorrow also, same time, 6 p.m. हाँ. तो क्वेश्चन के साथ हो. अब देखो डॉलर ही सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है. अब ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन ऐसा पूछो ना जिसमें दम हो. It seems के you have no clue. डॉलर द हार्ड करेंसी. ब्रिटेन वुड की बात मैंने पढ़ाई थी. ध्यान से सुनो सत्यम. गो थ्रू द इनिशियल जो है वीडियोस पे केयरफुली. ठीक है. दे आर पावरफुल पीपल. जिसकी लाठी उसकी भैंस. हम लोग तो उस वक्त ब्रिटेन वुड जब हुआ था, हम वी वर कॉलोनी. हमारा क्या रोल था? दे वर पावरफुल कंट्री. आपको पता होगा अमेरिका पास उस वक्त एटम बम भी आ गया था. 1945 में ड्रॉप किया था. तो आप सारे क्वेश्चन को सही जगह आप लिख करके रखो. टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम एंड वी विल हैव अ लॉन्ग सेशन. और जो करंट बजट पढ़ लो, तब तक सर्वे का पढ़ लो, और जहां से भी क्वेश्चन पूछोगे ना मैं जवाब दूंगा. एंड आफ्टर द मीटिंग. ओके, तो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो. तो पुट योर क्वेश्चन ससी टुमारो. शशि ने हाथ रेज किया था. शशि, आपका क्वेश्चन कल ले लेंगे. Same time tomorrow 6 p.m. People who are watching us. हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का लेके आओ और कुछ ऐसा पूछो कि मुझे भी ना आए. चैलेंजिंग क्वेश्चन हो. ओके, तो थैंक यू पेपल. और हम लोग टुमारो वी आर गोइंग टू मीट. टिल देन, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you, students, for joining us today. Do join us tomorrow as well for this session. And the link which we have shared today will be the same for tomorrow as well. Thank you. Have a great evening.